to Learning Desire. So today we are going to talk about postpartum hemorrhage. So this video will cover an overview of postpartum hemorrhage. What is postpartum hemorrhage? What is the incidence rate of it, and what are the types of postpartum hemorrhage? Now what is PPH? PPH क्या है? एक हैवी ब्लीडिंग होती है जैसे ही बर्थ हो जाता है बेबी का, उसके बाद ये कई केसेस में देखी जाती हैं। एंड ये क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है फॉर द मदर के लिए। और ये जो है इट इंक्रीज़ कर देती है मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट जो होता है फॉर अ मदर उसको। और अभी ये क्या है कि अगर अकॉर्डिंग टू WHO क्या है कि अगर ब्लड लॉस जो है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस 500 ml से एग्जेसिवली हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो उस चीज़ में क्या होता है कि उसको हम PPH बोल देते हैं। और फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग का मतलब ये है कि 500 ml से ज़्यादा है, 1 लीटर से ज़्यादा है, 2 लीटर से ज़्यादा है फ्रॉम और into the genital tract में हो रही है following birth of the baby up to the end of the puerperium, which adversely affect the general condition of the patient as evidenced by rising pulse rate and falling blood pressure. This is called as PPH, right? So it depends, as I mentioned, that it depends upon the amount of blood loss. Now PPH can be minor, moderate or severe. Now minor is what? If the amount of blood loss is like below 1 liter, then it is minor. And if there is excess of 1 liter blood loss, then it is moderate. And if the bleeding is above 2 liter, then it is a severe condition of PPH. Now this is the main this is an overview of PPH. What is PPH and what is the definition of PPH, and how the amount of blood loss vary. Now its incidence rate is like about 4 to 6% of all deliveries. Now PPH is divided into two types, right? First one is there is a primary PPH and secondary is next one is a secondary PPH. Now primary PPH is what? Primary PPH which occurs within 24 hours after the birth of the baby, and the secondary which occurs beyond the 24 hours, right? The main difference is this कि जो प्राइमरी है जो विद इन 24 आवर्स में हो रहा है PPH, और जो सेकेंडरी है वो बियॉन्ड 24 आवर्स में हो रहा है, राइट? So in primary PPH it is very common, and in majority hemorrhage occurs within the hours, right? And primary PPH is further divided into two categories, right? There is a third stage hemorrhage and there is a true postpartum hemorrhage. Now third stage hemorrhage में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज लेबर का हमें पता है, उस टाइम पे ये होता है कि ब्लीडिंग जो है अकर हो रही है, ब्लीडिंग अकरिंग बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। कि थर्ड स्टेज में क्या होना होता है? थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है एक्सपेल होना होता है, बट इसमें क्या हो रहा है थर्ड स्टेज ब्लीडिंग में कि ब्लीडिंग जो है बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हो रही है। और देयर अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी PPH इज ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। सो इसमें क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग इज अकरिंग आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी PPH. Now next one is secondary PPH. As I mentioned you that secondary PPH occurs beyond the 24 hours, and the bleeding usually occurs between 8th and 14th day of delivery, right? And it is also known as late puerperal hemorrhage or delayed PPH, right? So this is the main difference between primary and secondary PPH. So these are the main types of PPH. That I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below.